Sir, you are not audible. Hello, am I audible now? Yes, sir, you are audible. Okay. All right. Okay. Let's start again then. So good evening, good morning, everyone. Welcome to today's session on contract, real estate contracts and agreements. So why this topic is important? So real estate forms a significant portion of civil litigation, corporate transactions, and commercial deals. All right. So in the field of contracts in this field are often high value, complex, and sensitive to small drafting errors. Knowledge of precise drafting and enforcement is essential to avoid disputes. तो रियल एस्टेट का जो ये पूरा सेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर होते हैं, कमर्शियल डील्स होते हैं, सिविल लिटिगेशंस होते हैं, एंड ये बहुत हाई वैल्यू रहता है। और सेंसिटिव स्मॉल ड्राफ्टिंग एरर्स अगर आप करते भी हैं देन इट मेक डिफरेंस इन योर फाइनल थिंग। And knowledge of precise drafting enforcement is essential actually to avoid any disputes. If there was any disputes, then it would be cost your client a lot. So I have divided the whole our today's session into say, six different parts. So let's start with part one, which is a legal framework governing real estate contracts. So for this, we will take 10 minutes, and we'll complete that in next 10 minutes. So आप मेरे साथ ही इसमें रहिएगा, कहीं पे भी आपको लग रहा है कोई डाउट, so just drop your message in chat box. We'll take up in the end in our sixth part. तो व्हाट आर द स्टेचुरी प्रोविजंस, कौन से ऐसे स्टेचुरी प्रोविजंस हैं जो ये लीगल फ्रेमवर्क को कंप्लीट करते हैं? तो फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It gives us general principles, which is like offer, acceptance, consideration, lawful object, capacity, free consent, right? Second is the Transfer of Property Act 1882. Why it is important? It's give you a differentiation in sales, Sir, lease, next or slide, please. just a second, because I've made only 15 slides. The maximum portion I'll cover why vocab only. So Transfer of Property Act 1882, that's give you sale, lease, or mortgages, gifts, exchange. Third one is the Registration Act 1908. Why it's important? It's important for its mandatory registration of certain instruments. Like जब आप रजिस्ट्री कराते हैं घर की, आपने सुना होगा कभी कि घर की रजिस्ट्री कराई, right? So that's come from the Registration Act 1908. That's mandatory registration of certain instruments. Next is the Real Estate Regulation and Development Act 2016. इसे हम short में रेरा कहते हैं. That for the protection for buyers, regulations of promoters, mandatory registration of projects. Right? If you have any project coming up, then now it's mandatory. You need to register that project in RERA. The fifth one is the Stamp Acts. Stamp Acts is central and state both, because every state have a different stamp value, right? So ad valorem duty and consequences of insufficient stamping is also a part, right? So now, and the sixth one is Specific Relief Act 1963. That is for the enforcement of contract through specific performance. If there was if your builder is not giving you, or if there was any two persons have a contract between and one person is not actually uh, uh, performing his own part, then other one can go ahead in court and file a specific a case under specific relief act. uh, Now, what were the key judicial principles of all this? The six different parts which we have mentioned over above. Courts have repeatedly held that real estate contracts must be ambiguous to avoid litigation. राइट, कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें बना रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि लिटिगेशन आगे जाके ना हो, इतना स्ट्रांग होना चाहिए उसे, कहीं से भी कोई ऐसे लूप होल्स नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे व्यक्ति को मौका मिल जाए उसका एडवांटेज लेने के लिए, right? So this time being the essence, there was an you always heard that part, that time is being the essence in property transactions. So this came from an case example of Chand Rani versus Kamal Rani, and Sardamani Kandapam versus Raja Lakshmi. So you can see there was a mention of that Chand Rani versus Kamal Rani. Now,
if we'll go ahead, part 2 starts with the type of real estate contracts. Like, what are the types of real estate contracts? From part 1, we can understand that now that we have understood the legal framework, let's get into the different types of contracts you can actually see in practice. Right? Understanding the distinction is not just an academic, it's crucial because each type of contract carries different rights, obligations, and remedies. And misusing one in place of another can cause huge legal problems. What kind of an uh, what kind of a real estate contracts could be? The first one could be sale deed, which is for the transfer of ownership. What's the definition of a sale deed? A sale deed is the final legal document that transfers ownership of property from seller to buyer for a price, right? So that is the sale deed. And what is the legal basis of sale deed? It's covered under Section 54 of Transfer of Property Act 1882. That's the legal basis. And what was his features? Its feature would be that it's executed after all conditions are fulfilled, must be registered under section 17 of the Registration Act 1908. It passes all legal rights, titles, and interests to the buyer. Let's take an example. If you buy an apartment and execute a registered sale deed, you become the legal owner, right? And without registration, a sale deed has no legal effect for transfer of ownership. It's just a paper. So registration is equally important of that sale deed, and that registration comes under section 17. And the legal basis of a sale deed comes under section 54 of Transfer of Property Act. Second is the agreement to sale, right? So this is for the condition. This is conditional future transfer, right? So a promise to sell property in future subject to certain conditions is covered under agreement to sell. What are the key points? It does not transfer ownership immediately. First one, it's very important. If you are signing any agreement to sell, it doesn't mean that the somebody have already transferred that property in your name, or that title is not transferred. So it does not transfer ownership immediately. Second, it's create a contractual right for the buyer to demand sale on agreed terms. Let's take an example. If you'll sign an agreement to sale in the year 2023 July, let's say for an example of 1 crore, or is the consideration amount of an apartment, and you says that in next 6 months I'll I'll make sure that I'll do the registry part of my own, and I'll give you all the consideration amount. Out of that consideration amount, 10% is the normal practical amount which was given at the time of agreement to sale when you sign that agreement. Remaining 90% amount is can go according to the agreement to sale, whatever terms and conditions were mentioned between these two people, the seller and the buyer. You can mention that. And if in case after 6 months the buyer couldn't able to fulfill his condition consideration amount, the condition which he needs to pay a remaining 90 lakhs to the other party, then the other one have another condition says that कि अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे, then I'll forfeit his initial amount of 10%, that is 10 lakhs. And if that person couldn't able to transfer that property after fulfilling the condition of consideration, then he can go ahead and file a specific relief act के अंदर में जाके एक सूट फाइल कर सकते हैं, तो वहां पे वो पर्सन में जा सकते हैं. तो अग्रीमेंट टू सेल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड इट्स द फर्स्ट स्टेज when you have reached the, or previously when we heard na regarding sale deed which clears out कि टाइटल जो ट्रांसफर होगा वो सेल डीड के थ्रू होगा, और उसका फर्स्ट स्टेप आएगा आपका कहां से? अग्रीमेंट टू सेल से, राइट? व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ दैट अग्रीमेंट टू सेल? If breach can allow the aggrieved party to seek specific performance under the specific relief act. Example, a developer agrees to sell a flat after construction is complete. Until then, it's only an agreement to sell. Always distinction this from a sale deed in drafting. The remedies differ drastically because there was a huge difference between these two contracts. Agreement to sale versus sale deed, right? These two are completed. Now we are coming to lease agreement.
right? So lease agreement is only for the transfer of right to enjoy that property. You will not becoming a owner of that property, but you are going to enjoy the all rights of that property, right? A lease transfers the right to enjoy property for a specific period in exchange of for rent. Types, there was two types. One is the long term lease, that is often for 99 years, common for industrial or institutional land. Let's say an example in Delhi NCR for Noida is a city adjacent to Delhi. So a whole transactions are on lease only for 99 years. तो वहां पे आपको केवल लीज ही मिलता है whenever you'll buy a, and that is the long term lease for 99 years. Another is short term lease, that is for 1 to 5 years, mostly for residential or small commercial use. तो हम स्मॉल कमर्शियल यूज और रेसिडेंशियल यूज के लिए शॉर्ट टर्म लीज का यूज करते हैं, दैट इज फॉर 1 to 5 years. Now what is the commercial and versus residential in that? So commercial lease unusually have escalation clauses, fit out responsibilities, and subletting options. Residential leases are simpler and more regulated in tenant protection jurisdictions. Right, and what are the key legal provisions in for that? This comes under section 105 of Transfer of Property Act. Leases, so if you check, आपने देखा होगा आपके रेंट एग्रीमेंट जो नॉर्मली होते हैं वो 11 महीने तक होते हैं, 11 मंथ्स के लिए होते हैं. एंड इससे ज्यादा अगर टाइम होता है तो वहां पे आपको लीजेस ही करवाना पड़ेगा, बिकॉज उससे नीचे आप नॉर्मल से अग्रीमेंट करा सकते हैं, जैसे वो रेंट एग्रीमेंट आप बोलते हो इन शॉर्ट. Like leases over 11 months unusually require registration. Otherwise, they are inadmissible for proving terms in court. That's the reason why normally real estate broker for rent agreements will only mention the term period of 11 months, not more than 11 months. Because after that, you need to register that under section 105, which is a lease agreement, right? And that's need to be registered. Now, the fourth one is leave and license agreement. That is permissive occupation, right? So it's what's the definition of leave and license agreement? It grants permission to occupy property without transferring any interest. So how it is different from lease? Let's understand. What is lease? Lease is transfer of interest in property. License is mere permission, can be revoked as per terms. Right? Why it is used? So it is common in cities like Mumbai to avoid tenant protection laws actually. So what is the legal basis of this leave and license agreement? That is section 52 of the Indian Easement Act 1882. Right? For example, a company gives a consultant a flat to stay for 6 months. This is unusually why leave and license agreement, not by lease. Leave and license agreement, not lease. Correct? थोड़ा सा sound similar कर रहा होगा, but these are different things. Now comes to the fifth portion. Fifth is development agreements. Right? These are between the landowners and developers. तो फॉर एग्जाम्पल एक्स एक आदमी है जिसके पास में एक पोर्शन है 1 एकड़ का, एंड बट उसके पास पैसे नहीं है कि उसे डेवलप कर पाए, एक उस पर बिल्डिंग खड़ी कर पाए. देन वो क्या करेगा, एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ बात करेगा, उसको बोलेगा कि आप इस पे बिल्डिंग बना दो, एंड जमीन मेरा रहेगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आपका रहेगा. ये चीज प्रॉपर कैसे हो? फॉर दैट वी हैव अ डेवलपमेंट अग्रीमेंट. What is the definition of that development agreement? Contract where the landowners allow a developer to construct on the land with agreed sharing of revenue or built up area. There was two different models which is actually there. One is the revenue sharing, another one is the area sharing. What is revenue sharing? In revenue sharing, landowner gets X% of sale proceeds. In area sharing, landowners get certain flats or floats in the completed project. So there was two different type of models which actually works in development agreement. One is revenue sharing, another one is area sharing. What are the important clauses?
approval, timeline, force majeure, quality standards. These are the important clauses which you need to mention in every development agreement, right? And what are the practical risks in development agreement? Generally, what are the practical risks? So there was an if there was a delay in project completion or non-approval from authorities or default by either party, then there was a chances of litigation that would be initiated by any of the party, and it will go in court. And what was the stamp duties? It's vary from various states, and some both development agreement and power of attorney attract significant duties also, which needs to be paid jointly by landowner and the developer. Now comes the sixth one, that is the joint venture agreement, or you can say a collaborative projects, right? So in short, you have heard JV. JVs in short, we say that it's a joint venture agreement. What's the definition of that joint venture agreement? Two or more parties pool resources for a real estate project, could be developers, landowners or investors, right? दो या दो से ज्यादा जो पार्टीज अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं, मींस अपना पैसा डालते हैं, अपने रिसोर्सेज डालते हैं, अपनी मशीनरीज डालते हैं किसी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है? ये लोग लैंड ओनर्स हो सकते हैं, ये लोग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये लोग डेवलपर्स हो सकते हैं. And what is the purpose of that joint venture agreement? The purpose is to share that risk, share that capital, and share their own expertise in their different segments, right? So this is the purpose why they go for JV agreements. What could be the form of JV agreement? It could be contractual or via new company LLP. Either they can go for a contract, that is joint venture agreement turns into contract, in which they'll mention all the terms and conditions thoroughly. They'll go through thoroughly and mention each and every smallest information. And that is only limited to the one particular project. Otherwise, they have another option. They'll come as a group. They'll form a company or a LLP, limited liability partnership, and they can go ahead with that project. And what are the key clauses of that joint venture agreement? Key clauses consist of capital contribution, decision making, profit loss sharing, and exit strategy. Right? In JVs, what happens in the after development is completed by the real estate company, the landowners, specifically the landowners, they want an exit. They don't want to continue to go ahead with that project, because afterwards there was only maintenance which is required to be done by X company, and they don't want to take that responsibility. So all they do, just for a short amount of time, they'll gather that share and they'll sold it out to the same real estate company, and against that percentage of share they'll get a huge amount of money from that profit also, which was made after sale of the whole project. So that would be the exit strategy for the landowners specifically. And in that these deals consist of crores and crores of amount. Seventh is the mortgage deed, or you can say a security interest deed, right? What is the definition of mortgage deed? A transfer of an interest in specific immovable property as security for repayment of a loan. समझ आया? एक जो हमारा इंटरेस्ट है एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं किसी भी लोन के अगेंस्ट में. जैसे मैंने अपने घर पे लोन ले लिया, तो मैंने अपने घर को मॉर्टगेज करा एक बैंक को, तो ये सब के लिए में जो आपका पेपर वर्क तैयार होता है, दैट्स कॉल्ड मॉर्टगेज डीड, राइट? और in bracket security interest also. Or what are the types of mortgage deed? It could be a simple mortgage, mortgage by conditional sale, or unspecified mortgage. And there were different types of mortgage also are now available in market. It was developed during whole last 20 years. And these would be most mortgages except for equitable mortgage by deposit of title deed in certain notified towns required registration. And all like they were specific like mortgage by deposit of title deeds. That's not required registration because you already given
your original registry to and gave it to the mortgager. So now you don't not need required to register that thing. Except that you need to register that mortgage deed. What are types? Let's say, take an example of a builder mortgage, unsold flats to raise construction finance. So in case if a builder completed 70% of its project, but 30% still remaining, and he sold it out 20% of out of all these properties, and 30% are still unsold. So these unsold for the against these unsold flats or apartments, he can take a loan to complete the remaining 30% of his development project. So so now these 20-30% of remain unoccupied flats can go in mortgage, right? So you always need to check that whether your flat or apartment which you are about to buy, whether it's on mortgage somewhere or not, because it could be mortgage also, and it's done heavily in Delhi NCR in recent years from 2012 till 2022. Now the eighth one is power of attorney and related issues. Power of attorney meanings authorized grant. The definition of it's like authorized granted to another person to act on one's behalf in property matters. Right. So you are saying कि मैंने अपनी जो power है वो ट्रांसफर करी है इनको किसी भी एक्स जने को, और वो आपके बिहाफ पे ऑथराइज है प्रॉपर्टी के यूज करने के लिए. सो जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं मार्क्ड एरियाज जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं ओपन होता ना ही हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑल्दो these are not legally valid in court now, and this not gives you exactly the title or title holder of that property, but still it's going on in the market in India. So this is the authority granted to another person to act on one's behalf in property matters. What are the common use of this? A common use is to sign agreements, collect rents, and complete transactions when the principal is abroad. That was the basic use, but exactly in India, it's not used in this manner. It's used even to sell properties which was not registered with the development authority of that local town or local city. जैसे अगर हम दिल्ली में, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के अंडर में अगर कोई लैंड है और वो उसने ऑथराइज मार्क नहीं करा हुआ फॉर सेल पर्पज और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, तो दे विल नॉट गो फॉर रजिस्ट्री. ठीक है, वो रजिस्टर नहीं करेंगे उसको. तो उनके ट्रांजेक्शन्स जो ज्यादातर होते हैं वहां पे, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे होते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट लीगल, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन. So there was a Supreme Court ruling also, which came in Suraj Lamp and Industries Private Limited versus State of Haryana, and this case is gone back to 2011. And what are the key points of this case? Sale of property through GPA is not valid. Ownership can only be transferred by registered sale deed. GPA can still be used for genuine purpose like management, leasing, or authorization, but not as a substitute for sale. Right? जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा कि ये चीज जो होती है पावर ऑफ अटॉर्नी, वो लीगल नहीं है, जीपीए लीगल नहीं है. और ये चीज कहाँ से आई थी हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से. उस केस का नाम क्या था? उस केस का नाम था सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इसका जजमेंट कब आया था? इसका जजमेंट आया था 2011 में. इसके की पॉइंट्स क्या थे? इनका कहना था सेल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू जीपीए इज नॉट वैलिड. ओनरशिप कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय रजिस्टर्ड सेल डीड. Third is GPA can still be used for genuine purposes like management, leasing, or authorization, but not as a substitute for sale. Right? So whenever you are going to register the POA, that is power of attorney, always check it's specific, whether it's specific enough to cover the intended acts or not. All right. So this is a wrap up for part two. In this, each of these contracts serves a distinct purpose, right? As lawyers, your skill lies in matching the right contract to the client's need and ensuring it's drafted in compliance with the relevant statutes.
So, and regarding the misclarification, like using a license when a lease is intended can have a serious legal consequences. Remember, form and substances must match to each other, right? So now we are coming and going ahead, and we're starting part three. That is the essential clauses in real estate agreements. What are the essential clauses? Right? अभी हमें ये समझ आ गया कि कितने तरीके के agreements होते हैं. अब हमें अब हमें ये समझना है व्हाट आर द एसेंशियल क्लॉजेस इन रियल एस्टेट अग्रीमेंट्स, कि अब ये जो हमने ऊपर डिस्कस करे इसके अंदर में कौन कौन से क्लॉजेस एसेंशियल होने ही होने चाहिए. अगर वो नहीं होंगे तो एक वो प्रॉपरली माना नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट कि वो प्रॉपर है. ठीक है. नाउ दैट वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप ऑफ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेट्स जूम इनटू हार्ट ऑफ दीज agreements, the clauses themselves. Because no matter what kind of agreement you are drafting, sale deed, lease deed, development agreement, it's these clauses that determine the rights, obligations, and remedies of the parties. If you miss one, and you might leave a big legal hole, right? So it starts with part one, that is parties and recitals. Regarding parties, you need to mention their full names, father or husband names, age, occupation, address. For companies, you need to mention their registered office address, CIN, the authorized signatories details, and proof of authority, like board resolution or any POA. What's the capacity? That you need to ensure the party has legal capacity. Examples: minor can't transfer properties without a guardian's approval. All right. So similarly, you need to ensure that party has a legal capacity to enter into agreement or a contract. First one is parties, second is the recitals. All right. So what say background of the transactions? What is the ownership history? What are the negotiations? And what is the purpose of this agreement? Or you need to write it down in recitals part. This acts as a roadmap for interpreting the agreement in case of disputes, and it should be clear, factual, and chronological. You start with A and go till whatever you have till extent. And in court, judges often look at recitals to understand why the parties entered into the contract, right? So it's very important. Now the second is the description of property. Now second is the description of property. It must be precise and exhaustive. It should include plot number, survey number, CTS number, village name, taluka, district, and boundaries of all four sites, right? What is the extent and area in square meter or in feet? And reference to municipal map or plans. Okay, and the income status, that it's free from charges, mortgage, liens. You need to attach a site plan or map as an annexure. And remember this: if you write a vague description, and that will cause multiple ownership claims and make enforcement impossible. So this is very very important. Regarding the description of property, it should be clear. It shall be clear. If there was any issue in this, then it would cost a lot. Now coming to the other part, the consideration clause, right? So for the consideration clause, the price state in both figures and words. ऐसा नहीं होना चाहिए कल को वो बोले कि नहीं नहीं मैं तो इसमें एक जीरो लगाना भूल गया था. So always remember, you mention that in figures and in words. Now the next part is that what is the payment schedule, right? So if there was anything like if the person is deciding that I'm initially I'm giving 10%, after 3 months I'll give 25%, and after 3 months I'll give remaining another 25%, and whatever the payment schedule, you need to mention clearly in that. आपका डाउन पेमेंट कितना है, आपका इंस्टॉलमेंट्स कितना है, और आपका माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट कितना है. जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्टर ने बोला कि रियल एस्टेट डेवलपर ने बोला कि जब मेरा तीसरी मंजिल खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे 10% मांगूंगा, जब मेरा 10वीं मंजिल तक बन जाएगा और इंटीरियर हो जाएगा तो मैं आपसे 30% और मांगूंगा. सो दैट वुड बी अ
a certain milestone linked hello, somebody have muted me, I guess. Hello, can we continue Aage, or Yes, somebody? sir. Yes, sir, you You are audible. audible. Yeah, no, but somebody have just muted me. I don't know who. Mode of payment. So after the payment schedule, the next part is mode of payment. That आप पैसा दोगे कैसे? It would be either a bank transfer, check by demand draft, cash above certain limits is prohibited under Income Tax Act. तो आप एक लिमिट से ज्यादा आप कैश दे नहीं सकते आज की डेट में. तो आप या तो आप बैंक ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम आरटीजीएस और एनईएफटी वॉट एवर इज योर चॉइस regarding the amount transaction. Second is the check. Third is the demand draft. Right? These are the three different things. Now the next portion is you need to include GST or stamp duty allocations also, which you need to mention in that agreement. Example, you mentioned like a purchaser shall pay rupees 25 lakhs in 3 installment of 8 lakh 33,000 each on the following dates. So you need to mention those dates below that. So this is the consideration portion. Consideration के बाद अब आ जाता है possession clause. ठीक है. So when you need to fix a date, what is the date of possession, or a link to completion certificates, that what could be the time period for a timeline for completion of certain portion, and you gave us those certificates like OC. OC is occupancy certificate. तो जब आपका बिल्डिंग रहने के लिए रेडी हो जाता है तो आपका जो लोकल अथॉरिटी है वो बिल्डर को एक ओसी प्रोवाइड करा देता है. दैट्स फॉर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कि ये अब बिल्डिंग लोगों के रहने के लिए सेफ एंड सिक्योर है, अब इसमें रहा जा सकता है. तो दैट्स द ओसी. And these all possession clauses like date of possession, fixed date, or linked to complete certificate. After that, the conditions, that's payment conditions, approvals, and handover formalities. Right. So which also includes the penalty or for delayed possession. That's the liquidated damages, interest, or liquidated damages or interest. For example, if a real estate developer is saying that till next year, till 2026 July, I'll complete this project and provide you the OC certificate. But he didn't do that. In go further, so इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि इसके बाद में for every month the builder needs to pay certain percentage of an amount और आपके खरीदने हुए का अमाउंट का टोटल. फॉर एग्जांपल अगर एक लाख है या 1 लाख एज इंटरेस्ट बन रहा है आपका टोटल परसेंटेज से, तो वो 1 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करना उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी. और अगर नहीं करता देन यू कैन गो ऑब्वियसली अप्रोच टू कोर्ट. राइट. So for buyers time is of the essence. So that is why we always mention the possessions clause in this, and we fix dates and we mention each and everything, because if time is not there, if time is not fixed, then वो कभी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डेवलपर कंप्लीट करेगा नहीं और आपको कभी घर मिलेगा नहीं. So that is why that possession clause is very important in this. And in this you always clarify whether possession is legal as per law and physical actual handover is available or not. Now the other one is the representations and warranties. Representations and warranties are so by seller or developer, that whether the ownership or authority to sale, and no pending litigation or accusations proceedings, compliance with mutual, environmental, and building laws. And for buyer, what are the representation warranties? That financial ability to pay, purchase for lawful purposes. These acts as promises. If false, they can trigger indemnity or termination of that present agreement. डेवलपर के लिए कौन से हमारे की पॉइंट्स होते हैं कि क्या उसके पास ओनरशिप एंड अथॉरिटी है उस प्रोजेक्ट और उस प्रॉपर्टी को सेल करने की, उस पर कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है, या एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग तो नहीं है. थर्ड इज दी जो उसने कंप्लाइंस करे हैं आपके म्यूनिसिपल, एनवायरमेंटल एंड बिल्डिंग लॉज के या नहीं.
ये पार्ट होता है जहाँ रिप्रेजेंटेशन वारंटीज के लिए फॉर सेलर के लिए। बायर के लिए होता है कि वेदर दैट बायर हैव अ फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे, द फर्स्ट वन। सेकंड, परचेज फॉर लॉफुल पर्पस, ठीक है, कि वो लॉफुल पर्पस के लिए ही वो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। दैट्स कम्स अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। नाउ द सिक्स्थ पोर्शन ऑफ अग्रीमेंट, दैट्स द कंडीशंस प्रेसिडेंट एंड सब्सिक्वेंट। What are the precedent conditions? These to be fulfilled before transaction is complete, like approvals, NOCs, clearance of mortgages. And what is the condition subsequent after completion? To be fulfilled after signing, obtaining completion certificate, mutation in buyer's name. If these conditions are not met, then agreement may terminate or penalties may apply. Let's take an example. A development agreement might require environmental clearance before construction starts. That's a condition precedent. कोई भी डेवलपर अग्रीमेंट जब होता है तो उससे पहले एक एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले पहले, तो एक कंडीशन प्रेसिडेंट हो गया। सेवेंथ वन इज द फोर्स मेजर क्लॉज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट क्लॉज? दिस प्रोटेक्ट पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी व्हेन परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इवेंट्स बियॉन्ड कंट्रोल। ओके, लाइक कॉमन इवेंट इज नेचुरल डिजास्टर आ गया, वॉर कहीं पे स्टार्ट हो गया, कोई पैंडेमिक आ गया, कोई गवर्नमेंट बैन आ गया। So in these conditions where so this clause, basically force majeure clause, protect parties from liability when performance is impossible due to events beyond control. Examples are natural disaster, war, pandemics, government bans. In law of tort, you have heard act of God, so you can relate to that. So you need to specify whether what counts as force majeure, notice period to invoke it, consequences like suspension of obligations, extension of timelines, or termination rights. You need to mention all these three, right? Because I'll give you a tip that court always interpret this strictly. Don't assume every delay counts, right? So whenever you are mentioning this force majeure clause, you need to specify कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फोर्स मेजर क्लॉज में काउंट हम करेंगे। क्या हम नेचुरल डिजास्टर काउंट करेंगे, वॉर करेंगे, पेंडेमिक्स करेंगे, या गवर्नमेंट बेंस भी करेंगे, या हम उससे भी आगे अपने कुछ कंडीशंस रख सकते हैं जो हम फोर्स मेजर में के क्लॉज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका सेकंड थिंग इज विच नीड्स टू स्पेसिफाई इज द नोटिस पीरियड टू इन्वोक इट। लाइक दे यू नीड 30 days, 40 days, 60 days। आपने कितने दिन का नोटिस दिया है? 7 days का नोटिस दिया है। जैसे कोई वॉर स्टार्ट हो गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, या एक कहीं पे बाढ़ आ गई, वो प्रोजेक्ट बह गया, तो आप फिर आपने उनको टाइम दिया कि अब इस कंडीशन में ऐसा ऐसा कर सक ऐसा नहीं हो सकता। तो कितना हार्ट हुआ है वहां पे, कितना इशू क्रिएट हुआ है, उसके कंडीशन के हिसाब से आप कॉन्सिक्वेंसेस उसके मेंशन कर सकते हैं थर्ड पार्ट में। दैट इज आइदर यू कैन सस्पेंड दैट प्रोजेक्ट, या आप उसकी टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं, या उसके सारे टर्मिनेशन राइट्स जो है वो टर्मिनेट करके खत्म कर सकते हैं वहीं पे। So this is comes under force majeure clause. What is the part 7 of an agreement? Now the eighth part of agreement, that's indemnity clause. What is the meaning of that indemnity clause? One party promises to compensate the other for specific losses. Right? I am repeating once again. One party promises to compensate the other for specific losses. What are the common triggers? Common triggers are like defective title, undisclosed encumbrances, or statutory violations. Let's take an example. The vendor shall indemnify the purchaser against all losses arising due to any defect in the vendor's title. जैसे किसी बिल्डर ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, उसके पास में वो राइट ही नहीं था, टाइटल नहीं था उस पर कंस्ट्रक्शन करने का और उसे आगे सेल करने का, बट तब भी उसने ऐसा किया, देन ये इंडेमनिटी क्लॉज एक्शन में आएगा। एंड तब इसमें जो लिखा हुआ आपने लिखा होगा और जो अग्रीमेंट में मेंशन होगा उस हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा, राइट? So indemnity should survive even after completion or termination. ठीक है, indemnity clause जो है, अगर आपका ये प्रोजेक्ट, अगर आप ये अग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो गया है, तब भी रहना चाहिए। कोर्ट में रिक्वायरमेंट अगर पड़ सकती है तो
ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर हैंडओवर हो गया, बट तब भी फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज आ सकती है जिसकी वजह से आप इंडेमनिटी क्लॉज को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द नाइन्थ पोर्शन ऑफ अग्रीमेंट which constitutes a dispute resolution clause, right? Why it's important? Because it avoids confusion or where and how dispute will be resolved. अगर कल को कोई इशू क्रिएट होता है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में हम ये वाला पोर्शन, नाइन्थ पोर्शन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है, इसको इन्वोक करते हैं। व्हाट आर दी ऑप्शंस वी हैव? वी हैव आर्बिट्रेशन व्हिच इज फास्ट, प्राइवेट, फास्टर, कॉन्फिडेंशियल। Second is the court jurisdiction, which specifies the city and district. Third one is the mediation, that is a voluntary settlement before formal proceedings. These are the three dispute resolution clauses. Actually, you can choose any one of it. These are the three different options you have. And this clause must also include governing law. Example, this agreement shall be governed by the laws of India. Okay, and for cross-border deals, always address seat of arbitration and enforcement. So maximum for cross-border deals, we'll mention either the Singapore arbitration or the Dubai arbitration. Now let's come to the 10th part of an agreement. That is the default and termination. So this whole portion talks about default and terminations. Default events like non-payment, failure to hand over possession, breach of approval or misrepresentation. राइट? अगर आप पेमेंट देने में फेल हो जाते हैं, या हैंड ओवर जो प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर करने में, उसका जो पोजीशन है उसमें फेल हो जाते हैं, या जो अप्रूवल्स थी उसका ब्रीच हो जाता है, या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये जैसे डिफॉल्ट इवेंट्स हैं जहां पे ये क्लॉज काम करता है और जहां पे ये हम इसे इन्वोक करते हैं. दैट्स अ डिफॉल्ट एंड टर्मिनेशन क्लॉज. What are the consequences? This liquidated damages, its forfeiture of earnest money, and it also consists of right to terminate and claim damages. Uh, Specifically, we'll specify cure period. For an example, like 30 days to remedy breach before termination. Like 30 दिन दिए जाते हैं आपको अपनी रेमेडी सीख करने के लिए, जब उसके बाद हम इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देंगे. Right now, whatever is not completed in these 10 parts, जो अभी तक ऊपर 10 डिफरेंट पार्ट्स बताए गए, उसमें जो चीज कंप्लीट नहीं हो पाती है, रह जाती है, उसको हम कहाँ पे डालते हैं? उसको हम डालते हैं मिसलेनियस क्लॉजेज में. दैट्स द 11th पोर्शन. राइट? सो फॉर एग्जांपल, notices, like how notices will be served. Either it will be served to the other party by email, by courier or by registered post, or whether the entire agreement clause states that this document supersedes all prior oral/written agreements. Amendments also mentioned in this miscellaneous clause, like any amendment to the present agreement must be in writing and signed by all parties. We'll also mention the severability clause under this. If one clause is invalid, the rest still stand. And another one is the counterparts. Agreement may be signed in multiple copies, each treated as original. Right? So these are the 11 portions or 11 parts of an agreement. आप किसी भी agreement में ये 11 portions को रखते हैं, तब एक वो agreement आपका complete होता है. Right? So this is the wrap up for part 3, which is to think of these clauses as the DNA of the contract. They don't just fill space, they define enforceability, risk allocation, and commercial certainty. A strong real estate agreement is not about length. Actually, it's not about like you will mention like 40-50 pages of agreement, but still if it doesn't contain all these portions now, so it should be it's about covering all these essentials with precision and clarity. अगर आपने 10 पेज का भी अग्रीमेंट बनाया है और आपने के पास में सारी क्लैरिटी है और प्रिसीजन है, आपने सारी कंडीशन मेंशन करी है और कोई लूपहोल नहीं छोड़ा है, so that is much stronger contract than 50-60 pages booklet. All right, so let's start with our part 4. Part 4 is the common drafting error and how to avoid them.
So for every even the best lawyers sometimes fall into traps when drafting real estate agreements. The cost of these mistakes can be enormous, often bigger than the value of the legal fee itself. And come and let's look at some common errors and how to prevent them. Right. First one is a vague property description. Error like saying flat in XYZ complex without survey number, floor, building boundaries, or car parking details. You will just mention that this is the flat in XYZ complex, which is not complete actually. तो आप ज़्यादातर ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ज़्यादातर हो जाती है कि आपने कंप्लीट उसकी डिटेल्स मेंशन ही नहीं करी हैं और केवल ये लिख के छोड़ दिया कि इस बिल्डिंग में ये फ्लैट नंबर का हम अग्रीमेंट बना रहे हैं फॉर सेल, बट आपको उसका प्रॉपर सर्वे नंबर उसमें डालना पड़ेगा, फ्लोर नंबर, बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, कार पार्किंग डिटेल्स क्या है, एंड व्हाई इट इज रिस्की एक्चुअली आई विल टेल यू. Ambiguity in this can lead to multiple claims, confusion in registration, and disputes over actual possession. And let's talk about is avoidance. Always include detailed measurements, surveys, CTN numbers, annexed a plan or specify appendant rights like terrace, garden, and parking slots. Right, whether that property consists any terrace rights or not, whether it consists any garden which is exclusively used by you, or whether you have a specific parking slots against your flat number or apartment. The second is the missing statutory compliance clause. Right, so statutory compliance clause अगर आपने miss कर दिया है, then it's omitting references to required approvals, clearance and registrations. इसका impact क्या हो सकता है? If approvals are missing, the agreement can be void or lead to litigation at any point of time. How you can avoid this? Include warranties on compliance with laws like RERA, environmental norms, or municipal bylaws. Right? And make completion of statutory steps as a condition precedent. ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको क्या से अवॉइड कर सकते हैं? जब भी आप एक कंप्लाइंस क्लॉज, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस क्लॉज अगर मिस कर देते हैं या मिस ना करें, तो आप हमेशा उसमें वारंटीज, कंप्लाइंस की, ये रेरा और वेंडल नॉर्म्स एंड म्यूनिसिपल बायलॉज कंप्लीट कर दिए हैं नहीं कर दिए, वो सारा आपको मेंशन करना है. मेक कंप्लीशन ऑफ स्टैट्यूटरी स्टेप्स अ कंडीशन प्रेसिडेंट, आपको उसको प्रेसिडेंट बना के चले, ना कि आफ्टरवर्ड्स वाली के लिए कंडीशन के लिए. ठीक है. थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक आती है कि आप उसमें टाइमलाइंस क्लियरली मेंशन ही नहीं करते, दैट यू आर नॉट डिफाइनिंग टाइमलाइंस क्लियरली. लाइक सो देयर वाज अ वेग टर्म्स लाइक सून, एज अर्ली एज पॉसिबल, रीजनेबल टाइम. ठीक है, ज्यादातर लोग इस प्रॉपरली टाइमलाइन मेंशन करने की जगह ये सारे तीन वर्ड्स ज्यादातर यूज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के टाइम पर. वहां पे उन्होंने मेंशन कर देते हैं सून, या एज अर्ली एज पॉसिबल, या रीजनेबल टाइम में डिलीवर कर दिया जाएगा. ठीक है, ये बहुत ही रिस्क टेकिंग होता है. वाई? इट्स क्रिएट इंटरप्रिटेशनल डिस्प्यूट्स एक्चुअली. Buyer and seller may have different ideas of reasonable. For me, reasonable is next 6 months. That this project should be completed, shall be completed in next 6 months and delivered to me. For a seller who is actually a developer, for him, reasonable would be like 2 years time period. So there is a difference between both of them. So both have a different idea of reasonable. So इसलिए वो ambiguity नहीं लेके आओ. So interpretational disputes आपके नहीं होंगे. How to avoid it? Like you need to avoid it and fix exact dates. अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो आप उसको जो डेट है वो एकदम फिक्स कर दीजिए, या उसे स्पेसिफिक इवेंट्स के साथ जोड़ दीजिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल लाइक विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट. राइट, इफ you'll mention that when you'll receive a completion certificate, you need to transfer this property title to me within 30 days. राइट, तो उसके बाद में वहां पे एम्बिग्यूटी आएगी नहीं, इंटरप्रिटेशनल डिस्प्यूट आएगा नहीं. फोर्थ सबसे कॉमन जो मिस्टेक है जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं उस टाइम पे, वो होता है इन लॉन्ग इग्नोरिंग एस्केलेशन क्लॉज इन प्राइस.
राइट। आज प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, जब तक कंप्लीशन हुआ प्रोजेक्ट का ओनर ने डेवलपर ने बोला कि आज तो ये प्रॉपर्टी का रेट 1.5 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है। सो इन लॉन्ग टर्म और फेज्ड कंस्ट्रक्शन, नॉट क्लैरिफाइंग इफ एंड हाउ प्राइजेस कैन इंक्रीज, दिस कैन लीड्स टू डिस्प्यूट ओवर हिडन कॉस्ट हाइक्स। राइट। वो जो हिडन कॉस्ट आता है आपका बाद में, जब आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये तो बिल्डर ने कंडीशन हाइड करके रखी थी, मुझे तो बताया नहीं गया, अब मैं एक्स्ट्रा पैसा अपनी प्रॉपर्टी का क्यों दूं, हमारी बात तो 1 करोड़ की हुई थी, मैं 1.5 करोड़ क्यों दूं। राइट। सो दिस एक्चुअली केम इन एस्केलेशन क्लॉज। तो आपको एस्केलेशन क्लॉज जब आप मेंशन करते हैं मेंशन वाले में, तो वहां पे आपको क्लैरिफाई करना होता है इन लॉन्ग टर्म और फेज कंस्ट्रक्शन, इफ यू आर नॉट क्लैरिफाइंग इट एंड हाउ प्राइसेस कैन इंक्रीज, देन इट विल लीड टू डिस्प्यूट ओवर हिडन कॉस्ट हाइक्स। हाउ टू अवॉइड इट? आप इसको कैसे अवॉइड करेंगे? आप क्लियरली स्पेसिफाई कंडीशन फॉर एस्केलेशन। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, चेंज इन टैक्स रेट एंड लिमिट परसेंटेज। Right. If you'll mention these specific things, then you can avoid this error. Right. Escalation clause wala. Now comes to the fifth, which is blindly copy pasting from templates. एक आदत होती है ज्यादातर ड्राफ्टिंग के टाइम पे, हम लोग सीसीपी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो भी इनिशियल टाइम पे, कि ज्यादातर सेम ही तो है, बस मुझे ना बेसिक चीजें तो चेंज करनी है, बाकी सब तो सेम है, तो मैं एक दूसरा अग्रीमेंट का टेम्पलेट उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ और उसी में चेंज कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि उससे मेरा जो टाइम है वो बच जाएगा ओरिजिनल ड्राफ्ट करने का, एंड मेरा जो वो काम है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लाइक इन 10-20 मिनट्स। तो आप जब आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं ना, थोड़ा सा आपको ओपन माइंड करके करना पड़ेगा। आप जिस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, आपके ये सारे 11 पोर्शंस वहाँ पे हैं या नहीं है, और सारे 11 पोर्शंस आपके उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हैं या नहीं है। ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द एरर। If you're just using boilerplate template now without adapting to facts, local law, the transactions type, then it will then these clauses may contradict each other or be irrelevant, weakening enforceability. आपकी जो एनफोर्सेबिलिटी होगी इस अग्रीमेंट की, वो इतना वीक हो जाएगा कि आप उसे एनफोर्स कोर्ट में जाके एनफोर्स ही ना करवा पाओगे। So how you can avoid this blind copy pasting from templates issue? Always customize based on property type, location, and parties involved. Double check for outdated legal references or clauses struck down by courts. Okay, so that's the wrap up for part 4. The best drafting is proactive, not reactive. A little extra time in making clauses clear and compliant can save years of litigation later. Right? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रांग बनाएंगे, इतना अच्छा ड्राफ्ट करेंगे कि उसमें कोई भी ऐसा लूपहोल नहीं है, तो आपके क्लाइंट के जो आने वाले साल हैं जो उसके लिटिगेशन में जाएंगे, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं हुआ तो उसको आप बचा सकते हैं एक बेटर ड्राफ्ट, एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके। नाउ कमिंग टू द पार्ट 5। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 5। कोई जना यहाँ बोर तो नहीं हो रहा या कुछ भी, या अगर किसी को ब्रेक लेने का मन हो तो, बिकॉज 5 and 6 आर द टू पोर्शन रिमेनिंग, एंड आफ्टरवर्ड we'll go for our Q&A. Yes, sir. Please And continue. okay, all right. Let's continue with our part 5, that is a dispute resolution in real estate contracts. In dispute resolution real estates, what are the uh, things we have? We have civil suits, where common matters are title disputes, injunctions, or possessions claim. Title disputes is regarding the competing ownership claims. Injunction is regarding stopping construction or sale to third parties. Possessions claims are recovering property from unlawful occupants. What are the forums? Forums are civil court with jurisdiction over the property location. Drawback, often consuming and procedural heavy. So I'll need 1 2 minutes break for a water break. I'll just return after having a glass of water. All right. So I'm just muting for 2 minutes. I'm coming back.
राइट। सो पार्ट 5 दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स. So there was 5 different types, which you can see on your screens as well. There was civil suits, RERA, arbitration, and specific forms, and mediation. So basically, let's understand that the dispute resolution in real estate contracts. So what are the common dispute types in real estate contracts? क्या क्या होते हैं common types? Common types में आ जाता है आपका डिले इन पोजेशन. बिल्डर आपको ने बोला कि 2016 से उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, 2020 तक दे देगा, बट वो नहीं दे रहा अभी तक. So first dispute, which is a very common, is delay in possession. Second dispute is always arise in the construction quality issue. Third one is the deviation from approved plans and layout. बिल्डर ने बोला कि 2 BHK में यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, बट उसने जब आपको दिया, हैंड ओवर करा, तो उसने कुछ और ही प्लान जो है और लेआउट है वो कोई और लेआउट था, उसने आपको दे दिया. So this is also type of a dispute which arise like from deviation from approved plans and layout. Fourth is the non-payment or delayed payment by buyer. Buyer ने पेमेंट करा नहीं, या buyer ने 50% पेमेंट करके छोड़ दिया, उसका टाइम कंप्लीट हो गया, बट तब भी वो पेमेंट नहीं कर रहा रिमेनिंग. Then also this issue arises. Next is the title defect. टाइटल डिफेक्ट में जो कि उस व्यक्ति के पास में टाइटल था ही नहीं रियल, उस पे ऑलरेडी किसी दूसरे व्यक्ति ने भी क्लेम करा है, तो दैट्स कम्स फॉर टाइटल डिफेक्ट. नेक्स्ट इज द ब्रीच ऑफ एमिनिटीज कमिटमेंट. लाइक बिल्डर ने बोला था कि एक स्विमिंग पूल भी होगा, हमारा एक जिम्नेजियम भी होगा, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन सेंटर भी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला. दैट्स फॉर द ब्रीच ऑफ एमिनिटीज कमिटमेंट्स. तो वो भी वहां पे एक डिस्प्यूट अराइज होता है. एंड लास्ट इज द वायलेशन ऑफ रेरा प्रोविजंस, कि जो रेरा के प्रोविजंस है 2016 के, उसके वायलेशंस हुए हैं, जिस वजह से डिस्प्यूट अराइज हो गया. एंड व्हाट आर द प्रोसीजर? सबसे पहले इसका कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 होता है हमारा नेगोशिएशंस और एमिकेबल सेटलमेंट. सबसे पहले पार्टीज क्या करती हैं? पार्टीज अपने आपस में ही म्यूचुअली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं. ठीक है. इन दिस अनयूजली कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउज 15 to 30 days for amicable resolution from the date one party sends a written legal notice of dispute to the other party. What are the relevant provisions for this? Relevant provisions are Section 9 of Arbitration and Conciliation Act 1996, which talks about the interim relief possible even before the arbitration starts. Second is the RERA rules encourage settlement before litigation. So step 1 वो जो है हमारा regarding the negotiation amicable settlement वाला, वो आपका आता है यहाँ से, जब आप फर्स्ट टाइम लीगल नोटिस आप सेंड करते हैं ऑपोजिट पार्टी को. Right. And what are the provisions? I'll repeat it again. That's first is the Section 9 of Arbitration Conciliation Act. Second is the RERA rules. ठीक है. तो इन दो में से आपके provisions आ जाते हैं regarding negotiation and amicable settlement. सेकेंड स्टेप कौन सा होता है? सेकेंड स्टेप आता है आपका मीडिएशन एंड कंसलेशन का. दिस इज ऑप्शनल बट कॉमन एक्चुअली. दिस इज नॉट एक्चुअली अ मैंडेटरी क्लॉज की नहीं है आपको ये वाला स्टेप लेना ही लेना है, बट एक्चुअली दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. इन केस नेगोशिएशंस फेल, जब दो पार्टीज बीच में आपस में बैठी थी, उन्होंने ट्राई करा नेगोशिएट करने का, बट नेगोशिएशन फेल हो गया, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कराया एज अ मीडिएटर और बोला कि आप हमारा जो डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन करवा दीजिए. देन ये आपका ये आ गया मीडिएशन एंड कंसलेशन वाला पार्ट. If negotiations fail, the contract may require mediation or reconciliation. Mediator is jointly approved. Process is confidential. What are the relevant provisions? Relevant provisions is the Part 3 of Arbitration Conciliation Act 1996 for the conciliation proceedings. Right? So relevant provisions इसका Part 3 है Arbitration Conciliation Clause का, for mediation / conciliation वाले portion में. अब आता है Step 3. Step 3 is the most common and widely used. That is the arbitration clause. If settlement and mediation fails, party proceeds to arbitration as per the contract's dispute resolution clause. Right? What are the key elements of this arbitration clause? Key elements is first one, जब भी आप arbitration clause डालते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? Seat and venue. Like, so this determine the law applicable and place of arbitration. कि आपका arbitration कहाँ पे होगा और कौन से laws applicable होंगे.
सेकेंड इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, टिपिकली एक ही आर्बिट्रेटर को चूज करते हैं, सोल आर्बिट्रेटर, और अदरवाइज देयर वुड बी 3 arbitrators एज वेल, राइट? नाउ हु विल अपॉइंट द arbitrator, व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर? तो एज पर क्लॉज और बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, इफ पार्टीज डिसएग्री, तो ये इसके अंडर में आप जा सकते हैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। Fourth one is you need to mention the time bound proceedings that as per section 29A of Arbitration Act, award to be made within 12 months. एक साल के अंदर अंदर आपका आर्बिट्रेशन खत्म होना चाहिए, आप उससे ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकते आर्बिट्रेशन को। आपको आपका ये बाइंडिंग प्रोसीजर है, ये इस वजह से और ज्यादा इंडिया में चलता है, बिकॉज इंडिया में एक बार अगर जो फेमस डायलॉग है तारीख पे तारीख, वो रियल है, तो उसके लिए वो अगर आप एक बार सिविल डिस्प्यूट में जाते हैं तो आपके 5-6 साल मिनिमम टैक्स रहता है। So in this, what are the important sections and provisions? आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट आप 1996 आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको उसमें देखना है। और उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने, इसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास पेन और पेपर है। सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 18, section 29A, section 31 and section 34 are repeated once again. In Arbitration Conciliation Act 1996, the relevant provisions are section 7, section 11, section 12, section 18, section 29A, section 31 and section 34. Right? Now come to the step number 4, which is RERA forum. That is specialized for real estate actually. Instead of or alongside arbitration, many disputes can be filed directly before RERA authority for violation of RERA Act 2016 provisions, RERA educating officer for compensation, and for RERA appellant tribunal for appeal from RERA authority orders. And what are the time frame for RERA? RERA aims to dispose cases within 60 days. ठीक है, रेरा के प्रोविजंस के अंदर 60 दिनों के अंदर अंदर आपका केस खत्म होना चाहिए, ये रेरा कहता है। क्या रियल में ऐसा हो रहा है? सॉरी टू से, बट ऐसा नहीं हो रहा। इट्स टेकिंग लाइक 1.5 year अभी जो करेंटली टाइट है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन रेरा? if you read it, if you anyone wants to read it, then go for section 31, section 71 and 72, section 79 and 80 of RERA Act. That's the only 5 sections which is actually very important for you to read. I'll repeat it once again: section 31, section 71 to 72, section 79, section 80 of RERA Act 2016. Now comes to the most lengthy वाला part, which is civil courts और high courts और NCLT. ठीक है, अब हम प्रॉपर लिटिगेशन की बात करते हैं। If arbitration award is challenged, so it would be challenged under section 34 of Arbitration Act. In case of for consumer related grievances, और जब हम deficiency in services में फाइल करते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो आप वहां पे जा सकते हैं। अगर जो डेवलपर है वो इंसॉल्वेंसी में चला जाता है, जैसे आपका जेपी चला गया इंसॉल्वेंसी में, इस टाइम सुपरटेक भी इंसॉल्वेंसी में है, तो यह जाता है आईबीसी 2016 के थ्रू एनसीएलटी के सामने, राइट? अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और उसमें कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है ही नहीं, कोई भी मेंशन नहीं है, तो आप कहां जाएंगे? तब आपके पास लीगल रेमेडी लाया करेगी अंडर सिविल सूट अंडर सीपीसी 1908। ठीक है, जब आप पार्ट 5 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टिपिकली ड्राफ्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका गवर्निंग लॉ, कि ये किस लॉ के अंडर में आ रहा है। सो गवर्निंग लॉ में हम आते हैं। तो गवर्निंग लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंडिया, इसमें सब लोग यही मेंशन करते हैं। नेगोशिएशन पीरियड, आपको ये भी मेंशन करना है कि व्हाट वुड द नेगोशिएशन पीरियड, पार्टीज विल ट्राई टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एमिकेबली विद इन एक्स डेज आफ्टर रिटन नोटिस।
तो जब एक पार्टी दूसरे को एक लीगल नोटिस सर्व करेगी तो उसके कितने दिन के अंदर में नेगोशिएशंस, आप नेगोशिएशन के लिए आप बैठेंगे, वो आप मेंशन करेंगे नेगोशिएशन पीरियड वाले में। उसके बाद आएगा मीडिएशन। इफ अनरिजॉल्व्ड, मीडिएशन विल बी अटेम्प्टेड बिफोर एन एग्रीगेटेड मीडिएटर, राइट। नेक्स्ट वुड बी द आर्बिट्रेशन। हम लोग उसी से ही जा रहे हैं जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। वहां पे हमने स्टार्ट करा था गवर्निंग लॉ से, नेगोशिएशन पीरियड, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ज्यूरिडिक्शन और रेरा। तो दोबारा से हम वैसे ही चलते हैं। मीडिएशन अगर नहीं हो पाता फिर आप अग्रीगेटेड मीडिएटर के पास जाएंगे। ये क्लॉजेज हैं जो आप अपने ड्राफ्टिंग के टाइम में 5th पार्ट में डालते हैं, ठीक है, इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अंडर द हेडिंग ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। So you need to mention governing law, you need to mention negotiation period, you need to mention mediation. If unresolved, if negotiation is unresolved, then mediation will be attempted before an agreed mediator. After mediation, arbitration clause will come. For arbitration, reference to arbitration under Arbitration Conciliation Act 1996. I've already mentioned all those important sections. You need to mention the seat, venue, language, and number of arbitrators. लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक व्यक्ति केरला से है और एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर से है, दोनों जने अगर अग्रीमेंट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कॉमन लैंग्वेज वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो होंगी मेजरली सब इंग्लिश ही लिखते हैं, एंड इंग्लिश इज द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज फॉर आर्बिट्रेशन। फिफ्थ इज द जुरिडिक्शन पार्ट, that court of X city will have exclusive jurisdiction for matter not covered by arbitration, right? So preferably this is the common city chooses by both the parties. जैसे किसी ने बोला कि कुछ भी अगर डिस्प्यूट होगा तो हम बांद्रा की कोर्ट में मुंबई में जाके हम इसका केस फाइल करेंगे और डिस्प्यूट कर सकती है कोई भी पार्टी इन केस ऑफ डिस्प्यूट। रेरा रेफरेंसेस, आपको रेरा अथॉरिटी का भी रेफरेंस वहां पे लेना पड़ेगा, दैट दिस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप एंटर कर रहे हैं, that parties acknowledge that any dispute under RERA can be taken by RERA authority or so and so. That's basically belongs to the place where that project lie. For example, if that project is in Gurgaon, तो आप हरियाणा रेरा के अंडर में जाएंगे, ना कि यूपी रेरा या दूसरे किसी पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल क्लॉजेस। इसको काफी शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं ताकि आपको शॉर्ट एंड क्विकली समझ में आ जाए। यही सारी चीजें जो हमने ऊपर मेंशन करी हैं, इसको ही अगर हम राइट इट डाउन करेंगे तो फिर कैसा आएगा। इसका डेफिनेट आपका टाइटल आ जाएगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इट दिस इज द 5th पार्ट, सो विल स्टार्ट विद 5.1, ठीक है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इसको 5th पार्ट में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम 5.1 से स्टार्ट करते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली, it's in simple and X. This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Any dispute arising out of or relating to this agreement shall first be resolved amicably between the parties within 30 days from the date of a written notice of such dispute. If the dispute is not resolved amicably, it shall be referred to mediation conducted in X city in accordance with the mediation rules of the now you need to mention institution name over here, and the proceedings shall be confidential. Now the next portion in 5.4, if mediation fails, the dispute shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996. The arbitration shall be conducted by a sole arbitrator mutually appointed by the parties, failing which appointment shall be made under Section 11 of the Act. The seat and venue of the arbitration shall be City X. The arbitral award shall be final and binding on the parties. This arbitration clause is completed. Now the 5.5. Notwithstanding anything contained herein, either party shall be entitled to approach Real Estate Regulatory Authority under the RERA Act 2016 or any court of competent jurisdiction for interim or emergency relief. Right? Now the 5.6. Subject to the above, the court of City X shall have exclusive jurisdiction. Right? अभी हमने जो ऊपर मेंशन करे थे सारे पॉइंट्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट
आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हेडिंग के अंदर होंगे तो वो क्या क्या थे? एक गवर्निंग लॉ, नेगोशिएशन पीरियड, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुरिडिक्शन, रेरा रेफरेंस, राइट? उसका ही जब मैंने आपको अभी जो पढ़ के बताया, यही सारे पोर्शंस हमने इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के क्लॉज में रखे और उसको एक फॉर्म दे दिया, उसका एक ड्राफ्ट, एक सैंपल ड्राफ्ट बना दिया। वही मैंने आपको अभी सुनाया था। ठीक है, डू यू वांट मी टू रिपीट इट वंस अगेन, दिस पोर्शन? टेल मी इन चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, सो somebody says yes। जब हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, सो उस डिस्प्यूट के लिए हम क्या आगे करेंगे? व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट इज द प्रोसीजर? वो प्रोसीजर होगा क्या, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा कैसे? ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं कि जो डिस्प्यूट्स है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे, रिजॉल्व करेंगे कैसे। हम जल्दी से जल्दी कोर्ट की तरफ नहीं भागना चाहते, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ना कि ये कि केस करके सालों साल तक चलना। ठीक है, और इसमें अब होता, और कॉमन डिस्प्यूट्स होते किस वजह से हैं? सबसे कॉमन डिस्प्यूट होता है डिले इन पोजेशन, दैट बिल्डर इज नॉट एक्चुअली हैंडिंग ओवर द project, construction quality issue, deviation from approved plan or layout, non-payment or delay payment by the buyer, title defect, breach of amenity commitments on violation of RERA provisions। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन डिस्प्यूट्स हैं जो होते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, हम क्या क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले आपका आएगा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन विल बी अटेम्प्टेड बाय बोथ द पार्टीज, बायर एंड सेलर। वहां पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, नॉट द मीडिएटर। इसके लिए, और ये स्टार्ट होगा कब? ये होगा तब जब आप लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को भेजेंगे, और वहां पे, और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होगा कि जब आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं उसके 15 से 30 दिन का टाइम पीरियड वहां पे मेंशन किया जाता है रिटन नोटिस के बाद देने में। जब आपने रिटन नोटिस भेज दिया, उसको रिसीव हो गया, उसके 15 से 30 दिन के बीच में दोनों पार्टीज बैठ के नेगोशिएशंस अटेम्प्ट करेंगी। Now what happen if that negotiation fails? Then comes to the step number two. What is the step number two? Step number two is the mediation slash conciliation part. This is actually optional. ये mandatory नहीं होता है. I'm repeating once again. This is not a mandatory clause. This is a common optional clause, but it is very common in all contracts in real estate. So इसके लैंग्वेज कैसे होगा? इसका लैंग्वेज होगा, if negotiation fails, the contract may require mediation or conciliation, and mediator is jointly appointed, and इसका प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है हमेशा। What's the relevant provision of this? The relevant provisions lie under part 3 of Arbitration and Conciliation Act 1996, right? Now in case mediation also fails and you have mentioned arbitration clause in your agreement, then what happened? Then you'll write it down. If settlement and mediation fails, parties proceed to arbitration as per the contract dispute resolution clause. What are the key elements of arbitration clause? Key elements क्या होते हैं arbitration, कोई सी भी arbitration clause के key element क्या होंगे? Key element होंगे कि उसका सीट वेन्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा, that determines the laws applicable in place of arbitration. What are the number of arbitrators? Typically एक arbitrator होता है, but 3 arbitrator हो सकते हैं दूसरी condition में। So now there was only 2 parts, either you have a one sole arbitrator or jointly you have 3 arbitrators. What is the appointment procedure? It would be appointed jointly. If you are not appointed jointly, then what happens? Then you will approach the court under section 11 of the Arbitration Act, right? What is the time bound period? Time bound proceedings is as per section 29 of Arbitration Act. This award shall be made within 12 months from the inception of that arbitration, right? अगले एक साल के अंदर में आपको ये सारा का सारा आर्बिट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता है। ये किसकी क्यों करना पड़ता है? बिकॉज आर्बिट्रेशन सेक्शन 29A आपको ये बोलता है, व्हाट आर द फाइनल एंड बाइंडिंग आर्बिट्रेटल अवार्ड हैज द सेम इफेक्ट एज कोर्ट डिक्री, राइट? नाउ व्हाट आर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस? So important sections, you will write it down somewhere on a piece of paper.
important sections are section 7, 11, 12, 18, 929A, 31, 34. Read it out this. अगर आप और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा. This will help you out in clarifying the Arbitration Conciliation Act. Now the next step is the RERA forum, specialized for the real estate. And what are the three parts of RERA? RERA is either you'll go straight away to the RERA authority for violation of RERA Act 2016 provisions, or you'll approach the RERA adjudicating officer for compensation part, or you can approach the RERA appellate tribunal. That's basically the appeal from RERA authority orders. And what are the stipulated time frame for this? The stipulated time frame is 60 days. आपको 60 दिन दिया जाता है as per the RERA Act, और but actually जो TAT है currently that's for 1.5 year. That's the actual TAT. And you can go through the relevant provisions in this. There was only 5 important sections, most important sections, 5. Other is also important, but specifically read it out section 31, 71, 72, 79, and 80. ठीक है. And next dispute resolution comes to the civil court. Civil court, high court, NCLT. In case if somebody is not happy with the arbitration award, then he can challenge under section 34 of the Arbitration Act. For consumer related grievances, specifically in the deficiency of services, when you'll file a complaint in Consumer Protection Act 2019 for the deficiency of services, you can go ahead with the consumer court. If developer becomes insolvent, like JP or Supertech, you can go in IBC before NCLT, right? Or if there was any breach of contract without arbitration clause, then you will have a right to invoke civil suit under CPC or 1908. अब हम इसकी ड्राफ्टिंग जो है पार्ट 5 की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इस पर आते हैं, राइट? So what are the important things which you need to cover under this title dispute resolution? The important things that, repeat it once again: governing law, negotiation period, mediation, arbitration, jurisdiction, and RERA reference. So I made a sample part of it, dispute resolution. I'll read it once again. I'll take all the above points जो भी मैंने अभी ऊपर मेंशन करे हैं, वो सारे पॉइंट्स को इस पे कवर करके एक एग्जाम्पल, एक सैंपल, एक क्लॉज बनाया है. ठीक है. नाउ जितने भी ऊपर पोर्शंस थे वो सब इसमें कवर्ड है. आई विल रीड इट डाउन फ्रॉम 5.1. So 5.1 would be the laws as per the governing bodies, right? So 5.1, this agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Common. 5.2, any dispute arising out of or relating to this agreement shall first be resolved amicably between the parties within 30 days from the date of a written notice of such dispute. 5.3, if the dispute is not resolved amicably, it shall be referred to mediation conducted in City X in accordance with the mediation rules of the, you need to mention institutional name of that mediation, and the proceedings shall be confidential. 5.4, if mediation fails, the dispute shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996. The arbitration shall be conducted by a sole arbitrator mutually appointed by the parties, failing which appointment shall be made under section 11 of the act. The seat and venue of arbitration shall be City X. The arbitral award shall be final and binding on the parties. 5.5, notwithstanding anything contained herein, either party shall be entitled to approach the Real Estate Regulatory Authority under the RERA Act 2016 or any court of competent jurisdiction for interim or emergency relief. 5.6, subject to the above, the courts of City X have exclusive jurisdiction. Right? So we have completed everything under the dispute resolution. All right. So this is for the wrap up of part 5. And remember that dispute resolution in real estate is no longer one size fits all. Right? The knowing the right forum and remedy can make the difference between a 3-month resolution and a 10-year legal battle. अगर आपने सही रेमेडी चूज करी है अपने क्लाइंट के लिए उस एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट,
तो आपका ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। आपका जो डिस्प्यूट है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है वो 3 महीने में खत्म हो जाए, और हो सकता है वो 10 साल तक सिविल कोर्ट में केस भी चले। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पोर्शन में कि क्या चीज कैसे मेंशन करी है, एंड ये सबके लिए अलग अलग होता है, इसमें सीसीपी नहीं चल पाता। नाउ लेट्स कम टू दी पार्ट 6. So these are the practical tips. Actually, this part consists of practical tips for lawyers and for students. It will not take more than 5 minutes. So what are the important things you need to uh, uh, keep in mind while drafting all these kind of agreements and contracts? But always cross verify proper title through EC. That is any encumbrance certificate and mutation record, right? जब जब भी इसको वेरिफिकेशन की बात आती है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड that you cross verify the property title through EC and mutation records. The EC reflects the chain of ownership and whether there are any registered encumbrances such as mortgages or court attachments. ठीक है, क्या वो प्रॉपर्टी फ्री है या नहीं है, ये सारी चीजें हैं। आप ईसी सर्टिफिकेट, और जब आप ओनरशिप वो निकालते हैं, चेन ओनरशिप की चेन ऑफ ओनरशिप, तो उसमें क्लियरली मेंशन हो जाती है। आपको चेक करना पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी कहीं मॉर्टगेज तो नहीं है, या कहीं कोर्ट में ऑलरेडी अटैच तो नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट इज द म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन रिकॉर्ड्स एंश्योर दैट द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मैच द रजिस्टर्ड टाइटल्स. Missing mutation entries can indicate potential disputes or irregularities in title transfer, actually. And so do not rely solely on the seller's word or photocopies. Apply for the EC and mutation extract directly from the concerned departments. This was the टिप, आप कभी भी सेलर के वर्ड्स पर मत जाइए, या उसकी जो फोटोकॉपी है वो जो दिखा रहा है उसमें मत जाइए। आप ईसी के लिए अप्लाई कीजिए, म्यूटेशन एक्सट्रैक्ट करिए डायरेक्टली फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, एंड इसको क्रॉस चेक करवाइए, तो आपका लीगल वेरिफिकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी हो जाएगा। नाउ सेकंड टिप वुड बी रिव्यू म्यूनिसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड फॉर हिडन लायबिलिटी। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद तो लिया, बट आपको पता ही नहीं है कि उसके म्यूनिसिपल टैक्स एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्या क्या लाइबिलिटीज बन रही है, राइट? Outstanding property tax, betterment charges, conversion charges often surface only at the last minute. जब आप लास्ट मिनट में आप अग्रीमेंट कंप्लीट कर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज भी रिमेनिंग है। Certain agricultural lands may carry unpaid cess or be marked for acquisitions also. All right, so let's take an example. In many urban expansion zones, municipal authorities keep deferred demand notice ready to be issued after registration. ठीक है, जब भी जैसे कोई भी शहर का एक्सटेंशन किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो लैंड लिया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर किया जाता है। तो उस एक्विजिशन के टाइम पर भी जो अथॉरिटीज होती है कुछ लैंड को डेफर्ड की कैटेगरी में डाल देती है, और इनके जो नोटिस होते हैं, डिमांड नोटिस आते हैं, वो आते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, तो वहां पे एक इशू नया क्रिएट हो जाता है। And third would be keep abreast with state amendments and stamp duty and registration laws. Because you have heard that in City X now the stamp duties percentage has increases by 25%. So now before, if you have to pay 6 lakhs to the government, after to that 25 increment, you need additional amount in lakhs which you need to pay to the as a stamp duty or for registration purpose. And specifically, when the transaction involving NRI parties, ensure FEMA compliances. For this you need to make sure, because there was RBI guidelines govern how sale proceeds can be repatriated, and whether NRI sellers can sell certain type of properties in India or not. All right. So if there was any FEMA violation, and that violation can lead to penalties and invalidation of that transaction also. All right, so for this, you can have my tip that always check the NRI span, OCI, PIO status, and the mode of payment, preferably by NRE or NRO accounts before drafting your contract also, right? So
uh, I can also send you that due diligence checklist, that what are the checklists actually required for any property transaction. All right, so if you'll send me that, we'll send you these two things. One is the due diligence checklist. Second is the simple agreements. For this, somebody have to do one small task of sending me all the email IDs for sending these. Yes, sir. We'll share those things with you. All right, so my office will send these things to all the uh, email IDs. Right, but I'll still tell you the due diligence checklist over here as well. First is the title verification. In title verification, what you need to do? You need to obtain and verify the title deed or sale deed in the seller's name. Ensure there is clear marketable title without encumbrance. Check the chain of ownership for past 30 years if possible. Conduct a title search in sub-registrar office. All right. Second is the encumbrance or liability check. Obtain EC for last 30 years. Check for mortgages, liens, charges, court orders, disputes. Verify no outstanding loans with banks or financial institution. Third one would be land use and zoning compliance. Verify land use classifications. For example, for residential and commercial or agricultural land. Right. Confirm compliance with master plan or zoning regulations. For agricultural land, ensure it is legally converted if needed. Government approvals and permissions. Verify building plan approval from local authority. Check commencement certificate or completion certificate if applicable. For example, like OC. Obtain occupancy certificate for ready. Fifth would be physical and site inspection. Match site measurement with registered document and survey records. Check for encroachments or dispute with neighbors. Inspect physical condition and utility connections, water, power, sewage. Sixth is tax and due clearance. Verify property tax receipts. No outstanding should be due. Check water bills, electricity bills, social maintenance status. Obtain no due certificates from relevant authorities or society. Litigation check. Conduct a search for pending litigation in civil and revenue court. Obtain legal opinion from a property council, that local council over there. Identity and authority verification of seller. Verify seller's identity proof, PAN and address proof. If selling on behalf of another, check power of attorney validity. In case of companies, check board resolution authorization the sale or not. In agreement review, ensure agreement to sale clearly defines terms, timelines, and penalties. Confirm possession date and payment schedule. Verify inclusion of all fixtures and fittings if applicable in that contract or agreement. And last is the 10th one, registration and handover. Ensure sale deed is executed and registered at sub-registrar office. Collect original documents and hand over possession with keys. Right. So this is a wrap up from my side. All right. Thank you so much, sir, for very in detail and a wonderful session. Now we open the floor for question and answer. Whosoever have any question, they can write in the chat box, and we'll take that question. Right. And also, I also need a feedback. So whatever your feedback, you can send me over email if you're not. Sure, sir. So there is in one question that does the wheel fall within the definition of contract? Which one? Pardon? I didn't get it. Does will fall within the definition Will. of contract? Yes. Acha, will. No, will is no, will is not a contract. See, will will आप will कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं? किसने ये क्वेश्चन पूछा वैसे? I want that Sir, some a person with the name of Amit Bhatt. हाँ अमित जी आप अपना माइक ऑन कीजिए. Hi Amit, are you there? I don't think so. So there is an Okay, also one another question. right. That um builder delayed the project pending amenities
OC not received, but he's allowing residents to occupy the flats to avoid the delay penalty. Can the resident occupy and stay in the flat? What is ओसी your ओसी मिल opinion गया है? about this? ओसी मिल चुका है क्या? ओसी तो मिला ही नहीं होगा ना? No, sir. हाँ, तो वो तो इलीगल ऑक्यूपेंसी है। अगर आप इस कंडीशन में किसी को कुछ हो भी जाता है और उसमें बिल्डिंग में कुछ गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो नो म्युनिसिपल अथॉरिटी विल टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट बिल्डर। उल्टा आप उसको सू भी नहीं कर सकते कोर्ट में रिगार्डिंग डेफिशिएंसी ऑफिसर्स अदर थिंग्स, बिकॉज आप इलीगली ऑक्यूपेंट हैं वहां पे, और गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने आपको बोला ही नहीं है वहां रहने के लिए, अभी आपको राइट दिया ही नहीं है, आप इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठे हैं वहां पे। Thank sir, another question, that what is the essential clause must be in the mortgage deed? मॉर्टगेज डीड, आपको जो स्टार्टिंग के 5 बताए थे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो दी इसेंशियल्स। रिपीट करूंगा तो बहुत लंबा फिर से हो जाएगा, आधा एक घंटे का। तो जो स्टार्टिंग में 5 बताए थे मैंने, जैसे टोटल 11 पोर्शन मैंने बताए थे, 11th वन इज द मिसलेनियस पार्ट। तो दैट इज द बेसिक ऑफ एनी अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? उसमें से हम लोग उसमें से डिफरेंस वहां पे क्रिएट कर देते हैं कि किस अग्रीमेंट के हिसाब से हमें कौन कौन से क्लॉसेज और किस तरीके से चाहिए, वो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज दोज 11th वर द इसेंशियल एलिमेंट्स। Thank you so much, sir. So with this, that here we just ending this session. So thank once again on behalf of the Sambhav Initiative and Pro Bono India Organizing Committee, I extend my deepest gratitude towards to you for this राइट। wonderful session, and also sir for always accepting our invitation and gracing the audience. Thank you so much, sir. ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you, everyone. Have a great day ahead.